हेलो फूडीज, आज हम बनाएंगे भेजा तवा फ्राई। ये एकदम डिलीशियस बनती है। ऐड 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून salt, half teaspoon black pepper powder. Marinate 2 bhejas with this paste and keep aside for 20 to 30 minutes. Make sure that the masalas are evenly coated. अब हम इसको फ्राई करेंगे कास्ट आयरन तवा पे। Heat oil and place the marinated bheja. Fry this on medium-high heat. Do not disturb or move these bhejas for 3 minutes. And next I'm going to turn these bhejas and cook for 3 minutes on medium-high heat. Add little water and cook this for 2 minutes on slow flame. अब इसको छोटे छोटे पीसेस बना लें ताकि मसाला अंदर तक जाए। अब जाएगा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नींबू का रस और साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया। Now roast this for a minute and switch off the flame. I serve this delicious bheja fry with simple dal rice and shami kebab. Make sure you try this recipe and let us know how it turned out for you. And that's a wrap. Hope you guys enjoyed this video and we'll see you next time. Take care. Have a nice day.